बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। DTVNN के साथ मैं हुरानी अंदलीब। नजर डालते हैं खुसूसी रिपोर्ट पर। अमेरिका के 100 बड़े शहरों में शहरी पार्क्स की दर्जाबंदी, जहां हम शिफा पाते हैं। अमेरिकन कम्युनिटी मीडिया की जानिब से मुनक़दा इस अहम कॉन्फ्रेंस में शहरी पार्क्स के मयार और इनकी अहमियत पर तफसीली बातचीत 23 मई 2025 को मुनक्किद हुई। तकरीब में मुतअद्दिद माहिरीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया। विल कैलिन ट्रस्ट फॉर पब्लिक लैंड के डायरेक्टर ऑफ पार्क्स रिसर्च ने अपने बयान में कहा, हमारा पार्क स्कोर इंडेक्स जाहिर करता है कि मयारी पार्क सिर्फ तफरीह की जगहें नहीं बल्कि ये शहरी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा हैं। हमने देखा है कि जिन शहरों ने पार्क्स को तरजीह दी वहाँ माशरती हम आंगी भी बेहतर है। गैलीमोर रोड्रिगोज ट्रस्ट फॉर पब्लिक लैंड के कैलिफोर्निया असिस्टेंट डायरेक्टर ने जोर देते हुए कहा, हमें पार्क्स को सिर्फ सब्ज जगहों के तौर पर नहीं देखना चाहिए। ये दरअसल हमारे शहरों के फेफड़े हैं जो न सिर्फ माहौल को बेहतर बनाते हैं बल्कि माशरती रवाबित को भी मजबूत करते हैं। जस्टिन कटलर अटलांटा के पार्क्स एंड रिक्रिएशन कमीशन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, अटलांटा में हमने पार्क्स को सेहत आमा का हिस्सा बनाया। हमारे डेटा से साबित हुआ है कि पार्क्स तक रसाई रखने वाले इलाकों में सेहत के मसाइल कम देखने में आते हैं। एविट लोपिस लेडस्मा कम्युनिटी पार्टनर्स के ग्रीनिंग अमेरिकन सेंटर्स फेलो ने अपने बयान में कहा, हमारी कोशिश है कि पार्क सिर्फ कुछ खास तबकात के लिए ना रहें। हम चाहते हैं कि हर उम्र, हर सकाफत और हर माशरती तबके के लोग इन सब जगहों से यकसा फ़ायदा उठा सकें। कॉन्फ्रेंस में शरीक माहिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि शहरी पार्क्स न सिर्फ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी हैं बल्कि ये माशरती हम आंगी और शहरियों की सेहत के लिए भी नागुज़ीर हैं। तमाम शुरा ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया है कि आने वाले सालों में पार्क्स के मयार को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल सरमायाकारी और मनसूबाबंदी की ज़रूरत होगी। National Briefing. I'm Pilar Marrero, your moderator for today and co-producer of our weekly Friday briefings with my colleague Sunita Sorachi. Today our topic will reveal the ranking of the top 100 cities for urban parks. Urban parks aren't just great spots for jogging, playing, or lounging in the sun, though we love them for that. Great. Good morning and good afternoon, everybody. My name is Will Klein. I lead Parks Research at Trust for Public Land, including publishing our annual ParkScore Index. And we first published the index 14 years ago in 2012 to solve this problem. Carrie participated in public design workshops and mapping exercises. She showed up, she spoke up, she participated. Today, she chairs the 14-member board of the Alliance for Cook Park, a nonprofit organization that includes residents from the community as well as city heavyweights like the Atlanta Convention and Visitors Bureau, JP Morgan Chase, and a restaurant consortium. I think Commissioner Cutler probably agree that when she asks and speaks up for what they need, she tends to get it. Probably speak to it in just a little bit. Thank you. Thank you, Will. There are questions in the chat for you. Well, this is a question about California. Okay, so Sunita, ask your question. I think this is general also. Sure. Thanks, Pilar. Many California towns now have enacted strict ordinances around park usage, no camping, for example, no sleeping. And I remember back in the day, parks used to be a great space for Girl Scout overnighters, but that's no longer the case for many communities. So how do we keep parks welcoming spaces for all without demonizing vulnerable people? It's a great question. That's not not a short answer. I think one of the things we can think about is in the COVID pandemic, one of the things that really emerged where parks were one of those spaces where cities turned to. Yes, I'm sorry, I had a little difficulty unmuting. I have a quick question. Well, maybe it's not a quick question, but it's a question regarding. Yeah, well, good afternoon, everybody. I'm saying afternoon because I am on the East Coast here in Atlanta, Georgia. It's a beautiful day, but yeah, the city of Atlanta with many of our partners came together. With the Trust for Public Land. Thank you very much to all of the reporters from across the country who are covering this important topic. When I think about parks and open space, I really do think that our park systems across the country is where
our communities really come together and celebrate, life. We certainly saw in COVID that, for many communities, your front yard, your backyard is your local park. And unfortunately, in this country, over 100 million people do not have a close to home park. And 28 million of them. Redesma, Greening America's Cities Fellow and of Community Partners. Welcome. Thank you, Pilar, and thank you, everyone. And glad to be here and happy to continue always the conversation about this really important issue. And I'm glad you all are up for hearing more about it from folks like us that are here speaking. I'll get through a couple of things, but I'm going to try and talk slowly for the interpreter. Stories and call the superintendent of schools in LA and talk about everything that we've talked about today. Thank you so much and have a happy weekend. DTVNN से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए जुड़े रहिए DTVNN के साथ या विजिट कीजिए हमारे सिस्टर चैनल देसी टीवी USA, देसी उर्दू टीवी और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां 3000 से ज़्यादा चैनल्स को एक साथ देखा जा सकता है। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.